Hello everyone. Next we will see some basic examples. We will take it here. Like I have taken here, find the first and second. We will be looking at first derivative or first partial differentiation, second partial differentiation also. Both the orders we will be looking here. And this is the simple example which I have taken here, x cube plus y cube minus 3axy. It's very simple example. It will make your concept clear, like how to apply it and solve it. So to make it clear, I have done partial differentiation with respect to x, and I have done with respect to y as well to make it clear. So here on the left hand side I have done this here with respect to x. So first of all, the given function I will consider as z. Z is equal to x cube plus y cube minus 3axy. So and now we will be differentiating with respect to x. तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी del z अपॉन del x, एंड राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफ्रेंशिएट x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन जैसे हम करते थे रेगुलर, द सेम वे वी विल बी डूइंग, विच इज 3x स्क्वायर. नाउ सिंस वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y विल बी कंसिडर एज कांस्टेंट, सो y का हो जाएगा 0. नाउ if you look here, 3a I have it's a number, so constant I kept it outside, and differentiation of xy I put it over here. Like as I said, since we are differentiating with respect to x, y will be constant, so that's the reason this will be here, and x का derivative 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ये minus 3ay यहाँ पे आ जाएगा. So this first term will be as it is. Now similarly on the right hand side here, I will be differentiating with respect to y, so that's the reason I had left hand side I have kept it here as del z upon del y, and same way we will be doing it, but we have to keep in mind कि with respect to y करना है यहाँ पे. तो जो ये पहली टर्म है x क्यूब वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि x will be becoming constant because we are differentiating with respect to y. So सिर्फ इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है y क्यूब को, वो हो जाएगा 3y स्क्वायर, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस लास्ट टर्म 3a कांस्टेंट जो हमने बाहर रखा है, एंड xy का सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y. सिंस वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सो दैट्स द रीज़न वी गॉट इट माइनस 3ax. सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हमने सिर्फ एक बार ही डिफ्रेंशिएट किया है इसको, हमें और एक बार करना है तो हमें सेकेंड ऑर्डर भी मिल जाएगा. सेम वे व्हाट वी हैव डन, ओनली दिस इक्वेशन विच वी गॉट इट हियर, उसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, सो वी विल गेट द सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. सो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये सेम द इक्वेशन विच आई गॉट हियर, सेम आई एम डिफ्रेंशिएटिंग हियर. Why? Because I want to get the second order partial differentiation. तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन del z अपॉन del x को एक बार डिफ्रेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड. तो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x, एंड if you remember this, we got it del z by del x, we got it 3x square minus 3ay. So 3x square का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, and 3ay, see this will become all constant क्योंकि हमने with respect to x किया है डिफ्रेंशिएशन, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0 यहाँ पे. Same thing we will be doing here, but with respect to y we are doing it here. So that's why del square z upon del y square, that's what we will be doing, and same thing we have done it, which is 6y minus 0. So now we will take one more question here. Here this slide I have summed up all the things which we have done it, for how we got the partial differentiation first order with respect to x. Similarly first order differentiation partial differentiation with respect to y, और इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते वक्त हमने सेकेंड स्टेप लिया था, और एक बार जब हमने विथ रिस्पेक्ट टू x किया है डिफ्रेंशिएशन, और विथ रिस्पेक्ट टू y हमने और एक बार किया है. सो दिस इज़ हाउ I just put it together to make it very clear for you, all the steps to understand it will be
better. Okay, let's look at the next question. This is also basic example which is involving trigonometric function. Here it's a sin xy. जैसे हमने अभी किया था वैसे similar way we will do it, very similar way. I have done it here both with respect to x as well and with respect to y as well. So here first of all we'll look at we will focus on this with respect to x. So जैसे हमने रेगुलर डिफरेंशिएशन में किया था sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड ओवर हियर. Only thing is later on how we differentiate these variables, that time it will be little different way we will be treating. So here let's start with it here. With respect to x we will be differentiating. So sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, लेकिन यहाँ पे जो है x की जगह जो है xy आया हुआ है, so we have to take its differentiation. So that's I have written over here del upon del x of xy since I am differentiating with respect to x. तो ये cos x वैसे cos xy will be as it is and इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा. So that's the reason I got it that y cos xy. Similarly here on this right hand side I have done differentiation with respect to y. So del by del y of sin xy. Again sin xy का differentiation हो जाएगा cos xy. And here we got this xy. So I have taken its differentiation with respect to y. So y का with respect to y कर रहे हैं तो x constant हो जाएगा और y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये आ गया सिर्फ x यहाँ पे. So this is how we will be considering the variables and we will be doing the partial differentiation. This is fine when there are 2 variables, but what happens if there are 3 variables or more than 3 variables are involved in it? So how we are going to do it? So there are certain like a rule or criteria, we can say that, so which we will be following here. So for your understanding and for simplicity I have put it in the table. So it will be very clear if you look at once in all these 3. So with these 2 variables, like how we did it just now, only 2 variables will be involved, x and y. So जैसे कि हमने अभी किया था, when we are differentiating with respect to x value will be changing and y तो constant रहेगा, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. With respect to y, when we are differentiating here, x will be treating as a constant का differentiation हो जाएगा with 0 और y का सिर्फ 1 हो जाएगा. Now here with respect to, now here in the second column, now I have 3 variables x, y and z. So जब भी हम 3 variables की बात करते हैं तो जो थर्ड वेरिएबल जो आता है जो z है वो बन जाता है बाकी रेस्ट ऑफ द 2 वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई. उसका मतलब क्या होता है कि z अगर फंक्शन है x और y का, मतलब x और y की वैल्यू अगर मैं चेंज करती हूँ थोड़ी भी, तो उसका इफेक्ट z की वैल्यू के ऊपर होने वाला है. मीन्स z वैल्यू विल बी गेटिंग चेंज्ड. सो एंड x एंड y बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट, एंड z हो जाएगा डिपेंडेंट हो जाएगा. ओके, सो नाउ इफ आई विल, जैसे मैंने अभी कहा था कि z इज डिपेंडेंट ऑन x एंड y, तो x की वैल्यू अगर मैं चेंज करती हूँ, जैसे मैंने डेल बाय डेल x मतलब क्या है, मैं वैल्यू उसकी चेंज करती हूँ. यहाँ पे मैंने डेल बाय डेल y किया है, यहाँ पे y की वैल्यू चेंज की है. तो विथ डेल बाय डेल x अगर करती हूँ, इफ़ आई चेंज द वैल्यू ऑफ x, सिंस y इज़ कॉन्स्टेंट, y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये x का 1 हो जाएगा. एंड सिंस z इज़ डिपेंडेंट, उसकी वैल्यू चेंज होने वाली है बिकॉज इट्स डिपेंडेंट ऑन x एंड y बोथ. सो दिस इज डेल z अपॉन डेल x. सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू y व्हेन आई एम डिफ्रेंशिएटिंग, x इज़ कॉन्स्टेंट तो x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे 1 आ गया. सिंस z इज़ डिपेंडेंट तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y. तो ये हो गया 3 वेरिएबल्स के लिए. With 4 variables, same concept we will be using, but 4 variables are there, x, y, z and u. So जब भी 4 वेरिएबल आते हैं, जो लास्ट का जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे u आ गया,
So u will become a function of rest of the three variables. All these three variables are independent on each other, but u is dependent on x, y, z. u is dependent, मतलब अगर u की x और y और z तीनों में से either value will change, if in case changes it's going to affect on u's value. तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू चेंज की है, y की वैल्यू चेंज की है, यहाँ पे z की वैल्यू मैंने चेंज की है. तो इसमें any time whatever changes I will be making in x, y, z, it will make a difference in u's value because it's dependent on those values. So that's why its value has changed here. With respect to x, so y and z became 0. With respect to y, when I am differentiating, x and z became 0. With respect to z, I am differentiating, so x and y became 0. So this is how we are gonna use this partial differentiation concept with all the variables. Hope you understood this one. You need to understand this concept very well to solve more equations and to understand the more further concepts. Thank you.